So in this video we'll learn about how to pull the email account address from this email ID by just these four formulas. So we have the email ID. यहाँ पे हमारे पास email ID है, यहाँ पे @gmail.com, @yahoo.com, @aoi.com. तो यहाँ पे हमारे पास ये email IDs है और हम सबसे पहले ये राइट वाला फॉर्मूला यूज़ में लेंगे जो हमारे पास है. तो हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं = राइट ब्रैकेट. अब आपको ये देखना होगा यहाँ पे राइट के बाद ये हाईलाइट क्या हो रहा है. यहाँ पे ये जो हाईलाइट हो रहा है ये टेक्स्ट हो रहा है. ये बोल रहा है किस में से टेक्स्ट पुल करें. तो हमारा जो ये ईमेल आईडी है यहाँ पे लिखा हुआ है A2 में, कॉमा लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट. आप देख सकते हैं लेंथ के आगे ये हाईलाइट क्या कर रहा है, टेक्स्ट. हमारा टेक्स्ट कहाँ है, सेल A2 में है, ब्रैकेट क्लोज. माइनस क्या करेंगे, फाइंड. हमें फाइंड क्या करना है कि ये @ कहाँ है, कॉमा. अब यहाँ पे विद इन टेक्स्ट, टेक्स्ट का है हमारा सेल A2 में, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज. और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ईमेल आईडी का एक्सट्रैक्ट है @gmail.com ये आ गया. हम इसको ड्रैग डाउन कर देते हैं तो यहाँ पे yahoo.com और aoi.com. अब ऑटो एडजस्ट करने के लिए Alt+O+CA कर देते हैं, ये ऑटो एडजस्ट हो गया. तो यहाँ पे आपने इस फॉर्मूले में देखा, ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या, राइट, यानी राइट साइड से सर्च करेगा और फिर माइनस करेगा फाइंड. जैसे ही इसको मिलता है @ उसके बाद ये सारा क्या कर देगा, माइनस कर देगा. यानी पहले राइट हैंड साइड से सर्च करेगा और माइनस करेगा फाइंड. जैसे ये मिलेगा उसके बाद का ये पोर्शन जो है माइनस कर देगा. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने @A2 लगाया. अगर मैं इसके आगे +1 अगर कर देता हूँ तो ये बोल रहा है यू हैव एंटर्ड टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स. तो हम इस वाले फॉर्मूले में नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट फॉर्मूले में देखेंगे. ये हमारा जो है एज इट इज़ हम इसको रहने देते हैं. ये हमारा पहला मेथड था इस फॉर्मूले के ज़रिए कि हम @ के बाद जो ईमेल आईडी है वो निकालें. अब हमारा जो सेकंड फार्मूला है वो हम यूज़ में लेंगे. वो हमारा सेकंड फार्मूला मिड से स्टार्ट होगा. हम लिखेंगे मिड, हमने = नहीं लगाया, = मिड ब्रैकेट स्टार्ट. नाउ यू कैन सी दैट इट इज़ आस्किंग फॉर द टेक्स्ट. अब हम हमेशा ये जो रेफरेंस देगा नीचे हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. टेक्स्ट, हमारा टेक्स्ट कहाँ पर है, हमारा टेक्स्ट है सेल A2 में, कॉमा. अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है @ कॉमा और विद इन टेक्स्ट. टेक्स्ट कहाँ पर है, A2 में टेक्स्ट है. ये हमने सेल सेलेक्ट कर लिया A2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. और हम +1 इसलिए लगाए हैं ताकि @ के बाद जो भी कुछ है उसको क्या करे, इंक्लूड करे. ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर हम लगाएंगे लेंथ का फॉर्मूला. यानी आपने @ तो सर्च कर लिया, पर @ को सर्च करने के बाद हमें क्या एक्शन लेना है, @ के बाद जो भी जितना भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा क्या आ जाए, यहाँ पे हमारे पास सेल में एक्सट्रैक्ट होके आ जाए. तो यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया. अब लेंथ के बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट. हमारा टेक्स्ट कहाँ है, A2 सेल में. सो व्हेन वी विल क्लिक ऑन इट you can see that we have extracted gmail.com from this email ID. We will click on the right hand side corner of the cell and you can see that at once it has extracted all the email IDs. Now in this formula you can see that it is searching from the mid. Okay, from the mid you have to find @A +1. That means +1 means after @. That means starting from G. If I will change this +1 to multiply 1, oh it is 11.
You can see that at the rate is also included because this one represent at the rate, because this one represent at the rate, that's why it has pulled this at the rate as well. Now if you will drag it down, you can see that it will pull all the at the rates just by multiplying by 1. Now what if I put -1 over here, then it will take one value just before at the rate. Now you can see that it has pulled it 1@gmail.com. When I will drag it down, it has selected all the cells, all the values starting just before at the rate. So how does it work? So it is saying mid formula. From mid you have to search at the rate. I search this formula, search at the rate. +1 represent from here, from at the rate, from at the rate. So at the rate is 1, sorry, at the rate is 1 and +1 means G. And then why this length formula you are using? Because we are giving a command that whatever we are getting after at the rate, you have to select till the end. So this length function is pulling this formula from G to M. This length function is pulling the data from G to M. Alright, so next formula we will use is write. We will write tab. Now you can see that it is asking for the text. We will select this text, comma. It is saying length. So what does it mean? That start from the right and length means till here. Start from the right till here. Length, it is saying length text. Text, where is the text? In cell A2. Minus, bracket close, minus, we will subtract. So it is saying from the right select everything, because length formula is in place. From the right select everything, then minus find, we will find at the rate. What we have to find? We have to find at the rate, comma, within text. So where we have to find? In cell A2 we have to find +1. +1 means after at the rate. So we will write +1 bracket close, and now you can see that it has given us the data gmail.com, yahoo.com, aoi.com. So this is our third formula. Now here we can see that it is saying start from the right. Okay, we have started from the right hand side, search. You have to select all. Length formula means you have to select all, each and everything. So from here, starting from the right, it is selecting each and everything, minus you have to subtract, find at the rate. Wherever you find this at the rate, in cell A1 +1, that means G, you have to pull everything. So it has pulled it, all these email ID. Now we can make a change over here, as it is saying +1 if I will write again -1, it will show us an error. And if we write multiply by 1, it will show an error, because this is the right function and it is finding A1 in cell A1 and +1. So whatever is after at the rate, it will give you
that value in this cell. So we will move on to fourth formula, which starts from mid. Let me create some space. Alright, is equals to, it is saying mid formula, then bracket start. What it is saying, that text, select text, our text is in cell A2, comma, it is again saying search. So in the second formula you can see that we have find, and in fourth formula we have search. So in place of find we can also put find, bracket start, what we have to find, at the rate, we have to find at the rate, comma, within text, it is saying within which text, in cell A2, comma, in cell A2, bracket close, and then we will plus 1 means after at the rate. Alright, so from mid, search at the rate, so it has search at the rate. Now this formula is not complete because it will search for at the rate, and what we'll do after that, we have to select this yahoo.com, here gmail.com. so we have to give the length function, that whatever is after at the rate we have to select it out. So we will give length function, and it is text. Which text? Cell A2, bracket close. Alright, now you can see that it has extracted again gmail.com, yahoo.com, aoi.com. So what is this formula mid? It is saying mid, from mid we have to search at the rate. So in this mid we have to search this at the rate in cell A1, because as the command is given on the first formula, it will show you A1, this A1. Now when it searches this A1, what we have to do, we have to apply length formula, because if we will not put this length formula gets confused. So after at the rate we have to select everything, no matter it is 10 words long or 20 words long, we have to select everything. So length formula will be used to select everything after at the rate. So here you can see it has given us all the values. So we can format it down. Bold, and you can color it out. So this is the way how we can extract at the rate, anything after at the rate in the email account, no matter how many email IDs we have. And these are the four formulas. These are the four different formulas which we can use. So it is a combination of mid, find, length, right. So you can use this formula, and you can subscribe our channel Planet CMS app for getting a deep knowledge of MS Excel. Thank you.